Hello, the student of class +1 physics. This is Binod, lecture in physics. हमारा टॉपिक है यूनिट नंबर 1, that is the uses or the application of the dimensional analysis method. ओके बट आप इसमें जानते हैं कि बता द डायमेंशंस क्या होती है, डायमेंशनल फार्मूला, हाउ टू राइट द डायमेंशनल फार्मूला of a physical quantity and the principle of homogeneity. Okay, what are the uses or the application of the dimensional analysis method? These are to convert the one system of unit into another system of unit, and second, to check the correctness of the physical relation by using dimensional analysis method, and third, to derive the physical relation by using dimensional analysis method. But here हम एक और इसका एप्लीकेशन चेक करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस मेथड के, विच इज़ टू फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द कांस्टेंट इन ए फिजिकल relation. Okay, how to find the dimension of the physical dimension of the constant in a physical relation? To find the dimension of a constant in a given physical relation, the concept used, the like quantities can be added or subtracted. You know, the physical quantity can be added or subtracted. See, like quantity means कि एक ही तरह की क्वांटिटी को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है. फॉर एग्जांपल, सपोज करो कि हमारे पास एक रिलेशन है b इज इक्वल टू u प्लस 80. ओके, you know very well this is the equation of motion. In left hand side this is velocity, and this is again a velocity, and this is also velocity. It means velocity इसमें राइट हैंड साइड में दो फिजिकल क्वांटिटीज़ को ऐड किया गया, तो वेलोसिटी जो है वेलोसिटी में ऐड करी गई है. ओके, ये नहीं होगा इसमें कि वेलोसिटी में फोर्स को ऐड कर दिया जाए या फोर्स में वेलोसिटी को ऐड कर दिया जाए. सेम क्वांटिटी या लाइक क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, बट अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. एक आपने इसमें भी पढ़ा होगा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. What is the principle of homogeneity? Principle of homogeneity. The principle of homogeneity is the dimensions of a physical relation on the both side must be same. It means that जो लेफ्ट हैंड साइड में डायमेंशन फार्मूला होगा वही हमारे पास राइट हैंड साइड में भी डायमेंशन फार्मूला आना चाहिए. तो इट मीन दैट द कंसिस्टेंसी ऑफ दिस फिजिकल रिलेशन आप उसको चेक कर सकते हैं. ओके, और तभी आप उसको डिराइव भी कर सकते हैं किसी फिजिकल रिलेशन को. नोट, बट आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ द फिजिकल रिलेशन इन ए कांस्टेंट इन ए फिजिकल रिलेशन. ओके, चलिए तो इसके लिए हम कुछ एक एग्जांपल लेते हैं. सी हियर, दिस इज एन एग्जांपल. द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस डिपेंड्स on the time in accordance with the equation x is equal to at square plus bt cube, where x in meter, t in second. तो हमने फाइंड आउट करना है व्हाट आर द डायमेंशंस and the units of
A and P. ओके, अगेन यहाँ हम कंसेप्ट यूज करेंगे वो है कि सेम या लाइक फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड. सी हियर इन द लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है विच इज रिप्रेजेंट इन मीटर, या इसको हम कहेंगे पोजीशन ऑफ द पार्टिकल. और राइट हैंड साइड में क्या है, देयर आर द टू फिजिकल क्वांटिटीज एडेड. It means that AT square is also the distance or BT cube is also the distance. Okay, so therefore according to the principle of homogeneity, the dimension of left hand side is equal to dimension of right hand side. Okay, now what? So therefore the dimension of x is equal to dimension of AT square. Now what is the dimension of A? So dimension of A is equal to the dimension of x divided by dimension of t square. Write the dimension of x. X is in meter. Meter means the length, the unit of length L, और t जो है आपके पास हो टाइम है t और विच इज स्क्वायर. So what? The dimension of A is equal to m0 L की पावर 1 और t को ऊपर लेके जाइए तो t माइनस 2 हो जाएगा इसमें. दिस इज द डायमेंशंस ऑफ द क्वांटिटी A इन ए गिवन फिजिकल रिलेशन. और इसके यूनिट्स क्या बन जाएंगे? लेंथ के यूनिट होते हैं मीटर और टाइम के यूनिट होते हैं सेकेंड. तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और एक चीज़ हमने इसमें और बताना है इसमें कि व्हाट डू दिस रिप्रेजेंट, एंड दिस क्वांटिटी A रिप्रेजेंट एज द एक्सेलरेशन बिकॉज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर LT minus 2 the dimensional formula of acceleration. And second, similarly we can find the dimension of B की डायमेंशंस को भी हम डिराइव कर सकते हैं और इसका यूनिट भी लिख सकते हैं. ओके, द डायमेंशन ऑफ x इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ BT क्यूब. व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ B? द डायमेंशन ऑफ B इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ x divided by dimension of t cube. Again write the dimension of x in meter L divided by t to the power 3 or which is equal to m0 L t minus 3. This is the dimensions of the second quantity B. और इसके यूनिट्स क्या हो जाएंगे? What are the units of this quantity? अगेन लेंथ का मीटर है, टाइम का पर सेकेंड क्यूब. अगेन इसको हमने बताना है कि क्वांटिटी की क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है, एंड दिस इज द टाइम रेट चेंज ऑफ द एक्सेलरेशन. और इसको हम लिख सकते हैं, वी कैन relation, the time rate change of acceleration is the relation. इस तरह से हम by the application of dimensional analysis method we can write or derive the dimensions of a constant in a physical relation. चलिए एक और प्रॉब्लम इसमें लेते हैं. नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास क्या है? Write the dimension of A upon B in the relation f is equal to A under root x plus bt square,
where f is the force, x is the distance, and t is the time. Again, according to principle of homogeneity, the dimensions of this right hand side is equal to dimension of the left hand side. Dimension of left hand side equal to dimension of right hand side. Again, see here, in the right hand side we have the two quantities, a under root x plus bt square. It means that हमारे पास क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड में यदि फोर्स है तो ये राइट हैंड साइड की जो क्वांटिटी ये भी फोर्स है. तो a under root is a force, bt square is a force. Okay, the force can be added to a force. So therefore हम इसमें लिख सकते हैं इसका डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द डायमेंशंस फार्मूला ऑफ f is equal to a under root of x, the dimension of a under root x. What is the dimension formula of a? Which is equal to the dimension of f divided by under root of the dimension of under root of x. What is the dimension formula of f? M L t minus 2 divided by अंडर रूट एक्स इज द डिस्टेंस. तो डिस्टेंस के यूनिट्स क्या हो जाते हैं, डायमेंशंस हो जाती है एल, और इसका पावर कितना है 1/2. ओके, देन इट कैन बी रिटन एज एम एल. सी हियर दिस, यहाँ पे पावर 1 है और नीचे हमारे पास एल की पावर जो 1/2 है. तो 1 - 1/2 इज इक्वल टू 1/2 और t रेज़ टू पावर -2. ओके, सिमिलरली here the dimension of f is equal to dimension of bt square. जो सेकेंड टर्म है उसका डायमेंशन भी सेम रहेगा एज दैट ऑफ फोर्स, और डायमेंशन ऑफ b इज इक्वल टू f upon t square, the dimension of f upon t square. Write again the dimensional formula of force. We know that mlt minus 2 divided by t square, or which is equal to m, और अब सी है l, और यहाँ पे क्या चीज़ है, नीचे ऊपर पावर -2 है और नीचे पावर 2 है, तो माइनस ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो 2 - 2 इज इक्वल टू 4. दिस इज द डायमेंशंस ऑफ ए, द क्वांटिटी, सेकेंड क्वांटिटी b. अब हमें फाइंड आउट करना है द डायमेंशन ऑफ a अपॉन b. सो देयरफॉर द डायमेंशन ऑफ a अपॉन b इज इक्वल टू, दोनों क्वांटिटी की डायमेंशंस को लिख लो इसमें, एम एल पावर 1/2 t रेज़ टू पावर -2 डिवाइडेड बाई एम एल t minus 4. ओके, एंड इक्वल टू m के साथ m कैंसिल हो जाएगा, विच इज इक्वल टू m टू द पावर 0, और सी है l. ऊपर यहाँ पे l की पावर 1/2 है और नीचे इसकी पावर 1 है, तो ऊपर जाके बन जाएगा 1/2 - 1 इज इक्वल टू -1/2, और यहाँ पे कितनी पावर है इसका -2 है और नीचे इसका -4 है, ऊपर जा कर के -2 + 4 हो जाएगा t का पावर, विच इज इक्वल टू 2, तो t रेज़ टू पावर 2. दिस इज द डायमेंशंस ऑफ a upon b, m0, l - 1/2 and t 2. So this is our second
example related to find the dimension of the constant in a physical relation. एक और इसमें एग्जाम्पल लेते हैं हम इसमें. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज in a van der Waals equation p plus a upon b square into b minus b is equal to RT. Okay, write the dimension of and the unit of a and b. But see here, what is p? P is a pressure. Okay, और b हमारे पास क्या है इसमें, दिस इज अ वॉल्यूम, b इज ए वॉल्यूम. ओके, अब यहाँ पे यदि इसको हम देखते हैं इस क्वांटिटी में, तो p प्लस a अपॉन बी स्क्वायर, p प्रेशर, a का हमने डायमेंशंस यूनिट फाइंड आउट करने हैं और b वॉल्यूम है, तो प्रेशर प्लस प्रेशर लाइक क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड. यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया गया b माइनस बी, तो ये वॉल्यूम है तो b भी वॉल्यूम है. सो देयरफॉर द डायमेंशन ऑफ pressure is equal to the dimension of a upon b square. And what is the dimension of a? The dimensional formula of a is equal to the dimension of p multiplied by dimension of b square. Now write the dimensional formula of, so dimensional formula of p is equal to, what is pressure? Pressure is equal to force upon area. तो इसके डायमेंशंस क्या हो जाते हैं, m l माइनस 1 t माइनस 2. ओके, और वॉल्यूम के डायमेंशंस क्या बन जाएंगे इसमें, वॉल्यूम का डायमेंशन होता है लेंथ की पावर 3, l का पावर 3, l क्यूब. सो देयरफॉर द डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल टू m l minus 1 t minus 2 multiplied by l क्यूब, और हमारे पास है b स्क्वायर है तो पावर 2 हो जाएगा इसका, एंड विच इज इक्वल टू m l. सी हियर, यहाँ पे पावर -1 है और यहाँ पे टोटल पावर कितनी बन गई इसकी, 3 multiplied by 2 is equal to 6. ओके, तो -1 plus 6 is equal to 5 और t raised to power -2. This is the dimensions of a quantity A. Write the units. मास का यूनिट होता है किलोग्राम, लेंथ का मीटर और उसकी पावर 5 आ जाएगा पर सेकेंड स्क्वायर. दिस इज द फर्स्ट क्वांटिटी के लिए निकाल लिया हमने डायमेंशंस एज वेल एज द यूनिट्स. एंड सेकेंड इज b माइनस b. ओके, तो अगेन the volume b, the dimension of volume b is equal to the dimension of the required quantity b. So implies the dimension of b is equal to, what is the dimension of volume b, l cube. Okay, this is the dimensional formula of the quantity b, और इसके units क्या हो जाएंगे, मीटर क्यूब. The unit of the second quantity b is equal to m या मीटर क्यूब. ओके, तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी गिवन फिजिकल रिलेशन में जो कांस्टेंट टर्म होगी उनकी डायमेंशंस एज वेल एज देयर यूनिट्स. ओके.